Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So I'm glad that I am back with another video which was requested by many of you, that is tips to score exemption, that means 60 plus marks in CA, CS, CMA exams. But before that, if you're new to my channel, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. It really motivates me to make more productive videos for all of you. So starting with the topic of exemption, why exemption is important? देखो exemption अगर आपकी ग्रुप में आ जाती है as in 60 plus marks अगर आप एक भी सब्जेक्ट में ले आते हो, it always ensures your pass in that particular group. आप उस ग्रुप में पास होते ही होते हो, right? So always make sure कि आपने अपने ग्रुप में एक या दो पेपर ऐसे टारगेट जरूर करने हैं in which your preparation should be such that you score 60 plus marks. And for that, today I will give you 4 tips that will help you score 60 plus marks in CA, CS and CMA exams. सी मोर और लेस पैटर्न सेम है तीनों इंस्टीट्यूट्स का। ठीक है, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका एग्जाम्शन आ सके। आई स्कोर्ड एग्जाम्शन इन कंपनी लॉ एंड सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 में जो पेपर है उसमें, बिकॉज आई थिंक देर आर मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इफ यू वांट टू गेट द एग्जाम्शन अपार्ट फ्रॉम प्रेपरेशन एंड रिविजन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक एग्जाम्शन लाने के लिए 60 प्लस मार्क्स लाने के लिए the first point is do whole syllabus. Right, see 60 plus is a very like huge number. First of all we know कि पेपर जो है वो टफ आता है। सेकेंडली हम इतना डर जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पे चीज़ें याद आएँ। एग्ज़ाम हॉल में अपना ही अलग टेंशन एंड स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहली चीज़ विच आई हैव ऑलवेज प्रमोटेड इन माई रीसेंट वीडियोज ऑल्सो, दैट बी लेस सिलेक्टिव एंड डू मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस। और अभी भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई टारगेट करते हो, ट्रस्ट मी 60 प्लस मार्क्स, यू हैव टू डू होल सिलेबस, राइट? अगर आपका टारगेट होल सिलेबस है और आप करके जाते हो, आपके बहुत चांसेस हैं कि आप 60 प्लस मार्क्स लेके आ सको। जहां आप सिलेक्टिव हो जाते हो, जहां आप सिर्फ ये कहते हो कि मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, बाकी का आई विल जस्ट लीव और आई विल जस्ट नॉट स्टडी प्रॉपरली, वहीं पे आप अपने चांसेस जो हैं पास होने के या एग्जाम्शन के कम कर लेते हो, राइट? तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू होल सिलेबस। सारा सिलेबस जो है करने की कोशिश करो ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवरेज होगा तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अपने ग्रुप में, अपने पेपर में एग्जाम्शन के, राइट? सेकेंड थिंग इज वर्क ऑन योर कंटेंट। मेनी स्टूडेंट्स फील कि बस लर्न कर लिया, समझ लिया, दैट इज एनफ, राइट? हमें तो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ आ गए, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट? फॉर सेटिंग द बेस, understanding the concept is very important, but always remember that understanding and presenting are two different things. Presenting here means usage of the words that you make. Are you using keywords while you are writing answers? Are you using legal language while you're writing answers? Are you using professional language while you're writing answers? Plays a very important role. Many students don't focus on all this, right? They're like, okay, fine, ये पढ़ लो, ऐसे preparation कर लो, ऐसे revision कर लो, but they don't focus on this point that how is the content being put out. That is also very important, right? Examiner doesn't know you, right? Examiner आपको जानता नहीं है, तो at the end of the day what he or she will read, you will be evaluated, right? Like that, right? So बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने content में अपने answer पे work करो. You can do writing practice and match them with guideline answers to check कि आप वो keywords mention करते हो या नहीं करते हो. Up legal language, I don't say write it as it is, but I would say that at least write the language which is near to the legal language, near to the language of Bear Act and professional language, right? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे बच्चे ध्यान देते हैं और 60 प्लस मार्क्स ले जाते हैं। अदरवाइज आई वुड से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि जिसने अच्छे से अपना कंटेंट
लिख दिया, दैट इज द होल गेम चेंजर, राइट? तो सबसे पहले ये चीज समझा करो कि जब प्रेपरेशन करते हो तब ये भी देखो, सिर्फ समझना काफी नहीं है, बट ये सारी चीजें जानना कि कीवर्ड्स क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या एग्जैक्ट मुझे लिखना चाहिए, लीगल लैंग्वेज क्या है, प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या है। वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग 60+ मार्क्स इज श्योर। बिकॉज देखो, ये छोटी छोटी चीजों से आपका पेपर बाकियों के पेपर से अलग हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट मोर मार्क्स। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि कीवर्ड्स देखना, लीगल लैंग्वेज देखना और प्रोफेशनल लैंग्वेज देखना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. Now, moving to the third thing, after working on the content, work on your presentation skills. अब आपने अच्छा कंटेंट डाल दिया, कीवर्ड्स भी डाल दिए, लीगल लैंग्वेज भी यूज की, प्रोफेशनल लैंग्वेज भी यूज की, बट योर प्रेजेंटेशन वाज सो वीक दैट यू कुडंट राइट इट इन द वे पॉसिबल, राइट? अब आई नो कि ये सारी चीजें स्टूडेंट्स वुड बी लाइक, लिखा तो है हमने, कंटेंट तो सही लिखा है, लेकिन आप एक काम करना, आप जब आंसर लिखते हो, ठीक है, जैसे शुरुआत में व्हेन नो गाइडेंस इज देयर, इवन आई यूज्ड टू राइट लाइक एक पैराग्राफ लिख दिया। जब हम एक पैराग्राफ लिख देते हैं तो उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, राइट, इवन आफ्टर ड्यू डिलिजेंस छूटने के चांसेस होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द एग्जामिनर इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो इसीलिए हमने इस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है कि हमारा जो कंटेंट है ना, वो एकदम आउटशाइन कर जाए, राइट? इस तरीके से हमने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, एज इन शॉर्टर पैराग्राफ्स देने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है तो उसे अंडरलाइन करना है। ये सारी चीजें जो हैं, इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर पेपर, right? Baki, I will be coming up with the video on how to write answers right in exams. I am coming up with the video very very soon. But मुझे लगा कि ये वीडियो अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो प्रेपरेशन करते वक्त ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो. बेस्ट प्लेस टू एक्चुअली रेफर फॉर बेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स इज जो आपका इंस्टीट्यूट गाइडलाइन आंसर्स देता है, सजेस्टेड आंसर्स देता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, रेफर टू देम. फॉर एग्जांपल, I will take the example of ICSI. In ICSI, we see that whatever short notes are there, they are always answered in points. Whatever differences are there, they are always answered in tabular form. Right? Whatever case studies are there, they are always answered in 4 para format. So this is all you need to check from your institute's website, that what are their expectations and what should be my best presentation skill, right? See, there are two kind of paper. One where you start from the first line, you're writing. There are chances that maybe in between somewhere you've written something important that could get skipped, right? Or sometimes the like the handwriting in which the students write, it is not that clear that it could be written. On the other hand, you write it in a good way, in a planned way. One paragraph, okay, next paragraph something important, okay, next section for next paragraph. So this is how it makes a lot of difference in your presentation. Always remember this. While you say we want to score 60+ marks, कंटेंट से भी ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है. कभी कभी कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन प्रेजेंटेशन सही है, राइट? कंटेंट अगर आपका अबव एवरेज है, राइट, और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, देयर आर चांसेस यू विल गेट गुड मार्क्स. टू द लास्ट पॉइंट, फोर्थ, abide by your institute's instructions. Many students are not bothered about the instructions के exam instructions क्या आई हैं, admit card पे क्या instructions आई हैं. They're least bothered. They are like, okay, बस हमें तो आंसर लिखने हैं, सही आंसर होने चाहिए और हमें मार्क्स मिल जाएंगे. But this is not right. You are becoming a professional. Reading the instructions is so very important thing for you. So start it from now. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते. लाइक एक बहुत छोटी सी इंस्ट्रक्शन है जो हमेशा एडमिट कार्ड के ऊपर लिख के आती है, न्यू आंसर न्यू पेज, बट दे आर लाइक, पढ़ी नहीं, राइट? या फिर
जो आपने पार्ट्स करने होते हैं वो सारे एक जगह पे करने होते हैं, ध्यान ही नहीं देते। दे फील लाइक इट इज वेरी लाइक वेरी लाइट थिंग टू डू। ठीक है चलो छोड़ो, तो क्या हो गया, अलग अलग भी कर देंगे, राइट। एग्जामिनर ने तो इवेलुएट करनी है, बिल्कुल एग्जामिनर इवेलुएट करेंगे, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं करेंगे, बट द होल पॉइंट इज दैट what if we make our paper so nice, so presentable, right, that the examiner is compelled to give good marks to you, right? This is what I'm saying. I'm not saying your content is not good. Even after preparing, even after revising, many students say that मुझे इस बार जैसे दिसंबर अटेम्प्ट के बाद डीएम्स आए कि हम तो 65 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे या 70s में एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमारे इतने कम मार्क्स क्यों आए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं विच लीड्स टू दैट गैप इन योर पेपर, राइट। तो इन चीजों पे जब आप वर्क करोगे यू विल अंडरस्टैंड। तो इंस्टीट्यूट की इंस्ट्रक्शन से मेक इट अ हैबिट, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन रिलीज करता है इंस्ट्रक्शंस की, लास्ट टाइम भी मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, आई विल डेफिनेटली मेक इट, बट यू शुड रीड इट योरसेल्फ। जब क्वेश्चन पेपर आता है उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस होती है, रीड इट। वो ऐसे फालतू चीज नहीं होती, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज रीड देम एंड ऑलवेज अबाइड बाय देम, क्योंकि कभी कभी ना कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम मिस कर देते हैं विच कुड लीड अस इनटू ट्रबल। लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है टू स्कोर एग्जाम्शन एज इन 60 प्लस 70 प्लस। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा एग्जाम्शन लेना अगर आप इन सिंपल टिप्स को फॉलो करोगे। आई वुड ओनली से यू नीड नॉट गो इनटू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स कि बस कॉम्प्लिकेटेड अगर जब तक हम कोई चीज नहीं करेंगे तो शायद हम पास नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। Follow simple methods, simple techniques, and simple procedures for exam. You can simply pass, right? So all the best from my side. I wish कि आपको मेरी जो points हैं वो useful लगे होंगे। बाकी related to presentation skills, answer writing, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी वीडियोस चैनल पे आने वाली है। इसीलिए अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू इट and go follow me on my Instagram account. Also, my Instagram ID is CS Jaspreet Dhanjal. I post reels daily on my Instagram regarding academic motivation, life motivation, and in general motivation, so that you can get some help to stay motivated and consistent in your preparation. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.